Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 8. We are going to start unit number 1. Its title is Equality and Humanity in Islam. Our today's SLO is give an informed personal response to a text and provide some textual reference in support. Beta, what does it mean? पहले तो आपने टेक्स्ट के हवाले से जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना है एंड दिस शुड नॉट बी मेयरली इंफॉर्मेशन. आपने उस इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट के थ्रू सपोर्ट करना है, राइट? और ये ऐसे लो आप ग्रेड 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. गिव एन इन्फॉर्म्ड पर्सनल रिस्पॉन्स टू अ टेक्स्ट एंड प्रोवाइड सम टेक्सचुअल रेफरेंस इन सपोर्ट. आई होप यू रिमेंबर. सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट अगेन. Let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Quran Surah Al Imran verse 103, and hold firmly to the rope of Allah and together and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you when you were enemies and he brought your hearts together and you became by his favor brothers. And you were on the edge of a pit of the fire and he saved you from it. Thus Allah does make clear to you his verses that you may be guided. Yes, my dear students. बेटा ये खूबसूरत आया सूरह आल इमरान की हमें क्या बता रही है कि हम सब अपने रिलीजन इस्लाम की वजह से मुस्लिम उम्मा है. ये मुस्लिम उम्मा की अखुवत को बता रही है. और अब हम अगर कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहते हैं कि इस्लाम को रोप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट इज कुरान, द सुन्नह ऑफ आवर बिलवड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम उसको मजबूती से थामते हैं तो हम सब एक मजबूत उम्मा बनते हैं, एक मजबूत अखुवा बनते हैं. अब ये बात हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग मुस्लिम वी नो दैट. जब हम इस बात को कहीं डिस्कस करते हैं तो हाउ टू डू इट? वी कैन से इट्स मेंशन्ड इन कुरान सूरह आल इमरान वर्स नंबर 103. दिस इज हाउ हम जो बात करते हैं उसको हमने टेक्सचुअल रेफरेंस के थ्रू बताना है, सपोर्ट करना है कि यस वेयर इट्स रिटन. सो सबसे बेहतर टेक्स्ट कहाँ है? कुरान में. तो एक हमने आज ये भी डिसाइड करना है कि इंशाल्लाह हमने कुरान को अंडरस्टैंड करना है ट्रांसलेशन के साथ. छोटी छोटी आयात, छोटी छोटी आयतें हमने याद रखनी है, ख़ास तौर पर इस तरह की आयात जिसमें हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है, राइट? तो बेटा अब हमने अपने ओपिनियन को टेक्स्ट के थ्रू क्यों सपोर्ट करना होता है? लेट्स प्रैक्टिस इट थ्रू एन activity. It's a brainstorming activity. I brought you this chart. Teachers, kindly make the students to discuss whatever is mentioned here as sunnah. In groups, students will discuss it, and when you are done with this activity, kindly come back. जी, yes my dear children. बेटा आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया? हमें पता है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमारे पास महफूज है. उन्होंने जो कुछ कहा वो भी सुन्नत है, उनकी जो कुछ उन्होंने किया वो भी सुन्नत. दीज आर द थिंग्स वी ऑलरेडी नो अल्हम्दुलिल्लाह. और देखें, वन थिंग विच आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन सुन्नह इन इस्लाम इज साइलेंट अप्रूवल. अब अगर हम कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर कुछ हो रहा है, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और उस पर वो खामोश रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी का मतलब है कि वो अमल अप्रूव्ड है. दैट इज फाइन, राइट? इस बात को नाउ दिस इज व्हाट वी केम टू नो. वी कैन सपोर्ट इट थ्रू द टेक्स्ट, राइट? हम इसको टेक्स्ट, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं. जैसे एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे. एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आए, उन्होंने वहाँ पर नमाज अदा की. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे थे. फिर एक और सहाबी आए और उन्होंने वहाँ नमाज अदा की. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास बुलाया और कहा आप दोबारा नमाज अदा करें. और उसकी वजह क्या थी कि वो बहुत जल्दी में नमाज पढ़े थे. अब जिन सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उनको कुछ नहीं कहा, इट मीन्स अब ये साइलेंट अप्रूवल का क्या मतलब है कि उनका तरीका नमाज
ठीक था. This is how we come to know about beautiful sunnahs of our beloved prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this is how बेटा हमारा कोई भी जो हमारे पास information है या हमारा opinion है उसको हम टेक्स्ट के रेफरेंस के साथ सपोर्ट करते. ये नहीं कि आई फील लाइक दिस, मुझे तो ऐसा लगता है. हमें क्यों लगता है? क्योंकि हमने इसको एक ऑथेंटिक जगह पर पढ़ लिया है, राइट. तो हमें इसको प्रैक्टिस करने का क्या फ़ायदा होता है बेटा? एक तो डेफिनेटली जो आपका इल्म है ना वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होता है. थोड़ा सा हमें पता है, जब हम उससे रिलेटेड टेक्स्ट को मज़ीद पढ़ेंगे तो उसमें से हमारा हाउ वी एनालाइज कि हमने ये वाला पार्ट तो मुझे पता था, अब देखेंगे उसमें एक नई चीज़ है. बिल्कुल अभी जैसे सुन्ना के रेफरेंस में हमने ये चीज़ सीखी है. तो दिस इज़ हाउ दिस प्रैक्टिस इज गोना हेल्प यू टू increase your knowledge as well as आप critical thinking को enhance करती है. और बेटा ये सब की सब चीज़ें जो हैं overall it helps you to improve your knowledge, क्योंकि हमने हर दिन नई चीज़ सीखनी है, अपने इल्म में रोज़ इजाफा फरमाना है, right? Okay, so let's start reading the text. All of you be ready with that. First you tell me, what do you understand by the word sermon? आपने ये वर्ड कभी पढ़ा है, सुना है, क्या आपको समझ आती है? एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ हज़रत मोहम्मद खातिमुल नबीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीच ऑन द पीपल? सो पॉज द वीडियो, आंसर दिस क्वेश्चंस टू योर टीचर एंड देन कम बैक. जी बेटा, आपने सरमन का एक मीनिंग अपनी टीचर को बताया है. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट what does it mean in the text. okay, अब इस तरह से बेटा एक आपने डिस्कस किया, अब हम टेक्स्ट के रेफरेंस में उसको देखते हैं कि what does it mean. All of you open your books on page number 2 from the very first sentence. I'm going to start reading. Listen carefully because हमने इसके बाद इस पर activities करनी है. Right जी. The prophets Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's last sermon is one of the most complete messages to humanity and a beautiful summary of Islam. It addresses important topics for today's age, such as racism, gender equality, and human rights. And what does sermon mean? A talk on a moral religious subject. This is what we usually say as we say khutbah. And here, last sermon is the last khutbah, the khutbah of Hajjatul Wada. I hope in your Islamiyat you have studied about it. और यहाँ हमें सरमन का क्या मीनिंग मिल रहा है? This is telling us the summary of Islam. जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा था, उसमें हमें इस्लाम की एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव समरी मिलती है, राइट. सो बेटा दिस इज हाउ हमने अपनी इंफॉर्मेशन को, जो नॉलेज ऑलरेडी हमारे पास थी, उसको टेक्स्ट के रेफरेंस में सपोर्ट किया, उसको डिस्कस किया, राइट. सो दिस इज हाउ वील कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. नाउ लेट्स कम अगेन, स्टार्ट रीडिंग. अल्लाह सेज इन द कुरान दैट हज़रत मोहम्मद खातिमुल नबीन Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has been sent as a model for the people of the world. There has been certainly for you in the messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers Allah often. Surah Al-Ahzab verse 20. Prophet Muhammad's Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam final sermon was delivered during the Hajj of the year 632 CE on the 9th day of Zulhajj in the Arna valley of Mount Arafat in Mecca. There was a large number of Muslims present with the Prophet during this last pilgrimage, and pilgrimage we know it's Hajj, when he delivered his final sermon. After praising and thanking God, the Prophet ﷺ said, "O people, lend me an attentive ear." Means listen to me carefully. For I know not whether after this year I shall ever be amongst you again.
Therefore, listen to what I'm saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. Yes, my dear children, this is how our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam started his conversation on the last sermon. Now you tell to your teacher why he said so. Pause the video, answer this question to your teacher and then come back. Yes, my dear students, I hope now you know. आपने ये बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये हमें टेक्स्ट में से मिला और उन्होंने क्यों ऐसा कहा. Listen to me carefully because हमने फर्स्ट पैराग्राफ में इसको डिस्कस किया है कि वो सारी की सारी बातें जो वो बताने वाले हैं वो इस्लाम की बहुत बुनियादी चीज़ें हैं और दैट इज़ जस्ट लाइक अ समरी ऑफ इस्लाम और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. दिस इज हाउ बेटा वी रिलेट द टेक्स्ट विद आवर knowledge. All right. Okay. Beware of Satan. This is the first. Beware of Satan. यानी आप शैतान से एहतियात करें. बहुत अच्छा. अब यहाँ पर ओके लेट्स स्टॉप हियर. व्हाई हमें शैतान से मोहतात रहने की क्यों जरूरत है? क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है. वंस अगेन दिस इज हाउ वी टॉक और इसकी रेफरेंस में हम बहुत सी अहादीस और इवन ये देखें खुतबा हज्जतुल विदा में ये बात मेंशन है. तो बेटा जब भी हम कोई बात करते हैं टू मेक इट ऑथेंटिक लेट्स ब्रिंग द रेफरेंस फ्रॉम कुरान एंड हदीस फर्स्ट. उसके लिए हमें अपना कुरान का और हदीस का जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है. राइट. और जहां पर भी हमने उस टेक्स्ट को पढ़ा है उस ऑथेंटिक टेक्स्ट से आपने अपनी बात को सपोर्ट करना है. ऑलराइट. ओके. For the safety of your religion, your lives and property are a sacred trust amongst yourself until you appear before your Lord. And remember, you shall have to appear before your Lord, who shall demand from you an account of your actions. You have rights over your wives, and your wives have rights over you. Treat them with kindness and affection. Be faithful to each other and do not commit sins. Allah has forbidden you not to take interest, therefore all interest obligations shall henceforth be waived. And what does interest mean? With money paid regularly at a particular rate for the use of money lent. And बेटा इसको उर्दू में हम कहते हैं सूद. तो सूद को अल्लाह ताला ने मना कर दिया. इट्स फोरबिडन, इट्स स्टॉप्ड. और इवन हम सूद को हराम कहते हैं. राइट. अब बेटा आपने अपनी फर्स्ट you just stop your reading, read the text again and teacher kindly make it interesting. बच्चों से the way I tried इसी तरह different spots पर आप रुकें. make the students to tell whatever they know about it और फिर उसको textual reference के साथ कैसे हम लिंक करते हैं इसको खूब अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए. and when you are done with this activity, how we'll do it? Give an informed personal response. First you will do it and then support it to the text and provide some textual references support. So pause the video, enjoy this activity and then come back. Yes, my dear students, are you done with it? Good job. You are very smart. Now I'm giving you classroom practice. These are the questions once again, beta. जब भी आप text में से questions को answer करें, पहले think about the questions, then answer the question from the text. And when you are done with it, pause the video, first tell the answers, write the answers in your notebooks and then come back. Yes, my dear students, are you done with it? Okay, so here is your homework. I brought a very interesting piece of for reading for you. First you'll read this text, then you'll answer these questions here. This is your homework and here is an extended practice for this concept, how you will read and after making your own personal response, how you will support it from the text. So practice from this worksheet. Teachers, this worksheet is attached here. You may take a print or kindly बच्चों को ये practice के लिए आप दीजिए. So that's it for today. I hope you understand it. Tomorrow we'll practice this again. Till that time, take care. Thank you and Allah Hafiz.